dear students, this is Sana Riyasat. I welcome you all the YouTube channel of Multan Public School and College. Today we are going to study chapter number 6, An Introduction to Windows. This is the second half of this chapter from the book Right Byte 1. The content we are going to cover in this chapter is what is files, what are folders, how to create file and folder, how to copy a file or folder from one location to another, and what is the procedure of dragging, how we move a file without dragging it. Like there are two ways. One is either to drag that file, or what is the second way we will study. Last May we will discuss how to create shortcuts, and meanwhile we're studying the moving, dragging, copying and deleting of folders and file. What are files? A copy computer file is a space on computer's hard disk to store data. अब देखो कोई भी window, whenever you install any window, then it contains some files, folders, ठीक है, some sort of data, and that data is stored in files and folders. It is just like your book. There is a book which is known as folder, and pages in that book is known as files. All right, and there are different ways like this. As you can see, the bigger one, it is basically showing you the folder and which contain a file, a page in that folder. ठीक है? And if you see this figure where the PC, I have circled that the PC and then the document, and document के अंदर आपको different, अब ये जो आपको फाइल नज़र आ रही है वर्ड एक्स, these are files. क्यों? क्योंकि they are showing one page. ठीक है? Whereas that upper one जो कि yellow color की book आपको नज़र आ रही है, these are folders. ठीक है? Which contain multiple files in that. Okay, a folder is basically a group of related files. Next is you can rename. Like आपने एक दफ़ा बना लिया है folder, अब आप उसे rename कैसे करोगे? Here is the option. Once you right click on that, there are multiple options. Either to delete that folder, either to rename that folder, and when you click that folder, it will rename your file. ठीक है? Here are some labeling points for you that are important. आप जब भी अपना CPU या My Computer को open करते हो, you see this window in front of you. ठीक है? Here are the organizers. Organizers जो कि आपका जो आपको नज़र आ रहा होता है उसको organize कर रहे होते हैं, उसको आपको sequenced way में आपको show कर रहे होते हैं. ठीक है? और जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल at the top of the organizer, there is a directory, you can say, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ पे जाके क्या चीज़ खुली हुई है. ठीक है? That is also known as address bar. For example, आपके घर का address, it will अगर आप किसी को बताते हो तो first of all you tell colony, then street, then house number. Same like that, इधर भी address bar में आपके पास आपका जब whenever you open a file, तो एड्रेस बार में आपके पास उसका पाथवे आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है. लाइक इस फोल्डर में ये वाली फाइल आपने ओपन की हुई है. ठीक है? नेक्स्ट इज फोल्डर्स फॉर होल्डिंग योर फाइल व्यू ऑप्शन. अब ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर द व्यू ऑफ योर फोल्डर्स, कि आप अपने फोल्डर्स को कैसा नज़र आप which type of picture you want to which you want to show. ठीक है? आप कौन से अपना आइकन को किस तरह दिखाना चाह रहे हो. either you want your icon in small form, in larger form. ठीक है? यहाँ पे जाके आप अपनी editing कर सकते हो. I'll show you in my computer as well. First of all, go through the slides, then at the end I will show you. और उसके बाद आपकी ये फाइल्स रखी हुई हैं, ये फोल्डर्स रखे हैं. सॉरी, these are not files, these are folders. क्यों? क्योंकि it contain a lot of file in them. Next is we have how to create a file.
अच्छा देखिए, इसके टू ऑप्शंस होते हैं किसी भी फाइल को बनाने के, एज आई टोल्ड इन द स्टार्ट वन एज वेल। एक तो ऑप्शन है आप विदाउट ड्रैगिंग जस्ट राइट क्लिक करोगे, या अगर आप सिंपल माई कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट्स खोलते हो तो आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, जहाँ पे आपके पास ऊपर इन द ऑर्गेनाइजर बार यू विल सी अ न्यू फोल्डर इन दैट। ठीक है, वन ऑप्शन इज़ दैट कि आप उस न्यू फोल्डर को क्लिक कर दो। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास फिर ड्रैगिंग की आ जाती है। So whenever you click that new folder, it will create a new folder for you, and then you can name it on your behalf. और जो आपको राइट साइड पे इमेज नज़र आ रही है, इट इज़ बेसिकली आई राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर, और फिर उसने मेरे से पूछा है आइदर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। इट मीन्स कि उस वो पूछ रहा है कि इस फोल्डर के अंदर यू वांट मी टू क्रिएट अ न्यू फाइल, मतलब इस फोल्डर के अंदर ही बनेगी जो भी फाइल बनेगी। ठीक है, next we have I have detailed we have discussed detailed the labeling of this image. इधर आप देखो in the file extensions you can see that there are 3 folders and 2 files. अब जो फाइल्स हैं फोल्डर्स के अंदर आई टोल्ड यू देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल्स। ठीक है, अब एक एक फाइल की फोल्डर तो आपको टाइटल में नहीं बताएगा ना। जब आपके पास एक कोई फाइल रखी हुई है आपके सामने, तो फिर वो आपको उसकी एक्सटेंशन बताएगा। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन इज बेसिकली इट विल टेल यू कि ये फाइल किस टाइप की है, विच टाइप ऑफ फाइल इज दिस। लाइक अब आप देख सकते हो सामने यू हैव द file of .txt as I have told you कि डॉट के बाद जो कुछ भी हम लिखते हैं बल्कि इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर आप अपनी फ़ाइल को वर्ड फाइल में सेव करोगे तो इट विल गिव यू .doc। ठीक है, अब मैंने ये वाली जो फाइल सामने रखी है आपको नज़र आ रही है, दीज फाइल्स आर ऑफ नोट पैड फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल है, इसके ऊपर हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई इस फाइल्स के आगे .txt लिखा हुआ है। ठीक है, इट विल शो यू द एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सटेंड। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ फाइल और अ फोल्डर। अब आप देखो वन पे उसने सिंपली आपको वो शो कर रहा है कि आपको ये पिक्चर सामने नज़र आएगी। आपने क्या करना है, टू पे आपने इसको क्लिक, एक तो आप इसको क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद यू हैव ऑप्शंस, एंड द थर्ड वन इज़ कि आपके पास ऊपर टाइटल बार के नीचे रिबन में यू कैन सी अ वर्ड इज रिटन दैट इज़ न्यू आइटम। न्यू आइटम में वो आपसे पूछता है कि आप न्यू पिक्चर बनाना चाह रहे हो, आप न्यू फोल्डर बनाना चाह रहे हो, आपने शॉर्टकट दे रहे हो। लाइक देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच एवर यू वांट टू चूज। ठीक है, जबकि राइट साइड पे जो आपकी इमेज है इट इज़ क्रिएटिंग अ फोल्डर इन ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, फोल्डर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर खोल रहा है। नाउ इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू क्रिएट a shortcut, you want to create word file, you want to create Microsoft PowerPoint file. ठीक है, or you want to take text document. See, there is a second fourth last option that is text document, जिसकी हमने ये एक्सटेंशन अभी देखी थी। ठीक है, ओके, अब ये न्यू फोल्डर वाली ऑप्शन आप लोगों को पता लग गई है कि ये न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं इन होम ऑप्शन। लाइक अगर आप माई पीसी या माई कंप्यूटर खोलते हो तो उसके अंदर आप न्यू फोल्डर कैसे बना सकते हो विदाउट ड्रैगिंग। नेक्स्ट इज थर्ड हमारे पास आता है क्रिएटिंग शॉर्टकट्स। अच्छा, शॉर्टकट्स में आपके पास एक ऑप्शन होती है, लाइक शॉर्टकट इज व्हाट इट इज़ बेसिकली। ठीक है, शॉर्टकट्स में हमारे पास लाइक यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्टकट या शॉर्ट वे है। समटाइम्स लाइक वी नीड टू यूज सर्टेन फाइल वेरी फ्रिक्वेंटली, we need that file in front of our eyes every time। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना शॉर्टकट प्रिपेयर कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द फोल्डर, हम बार बार उसको मेन जगह पे जाके फोल्डर को खोलें, वी मेक इट अ शॉर्टकट, जिसकी वजह से वो एक शॉर्टकट बना लेता है तो वो ईजिली आपका एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, the shortcut is placed on the desktop so that we can access it easily. We simply need to double click on the shortcut instead of the file to open. अच्छा, अब मैं आपको अपने ड्रैगिंग वाला ये हमने शॉर्टकट बना लिया है। ठीक है, शॉर्टकट से क्या होता है, इट बेसिकली हेल्प्स यू कि अच्छा देखो फॉर एग्जांपल यू हैव अ लाइब्रेरी
ठीक है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी एंड यू वांट टू चूज द राइट वन, ठीक है। अब आप उस पूरी लाइब्रेरी में डेली के डेली राइट बाय वन ढूंढोगे तो इट विल टेक टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करते हो, आप अपने रिसेप्शन पे ही आप अपने राइट वाइट की बुक रख देते हो। व्हेनेवर यू एंटर इन द स्कूल यू विल सी दैट बुक, ठीक है। आपको उसके लिए लाइब्रेरी में जाने की और फिर उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक यू टाइम। तो शॉर्टकट से क्या होगा, आपका आपका टाइम भी नहीं लगेगा एंड आपको इजीली वो एक्सेसिबल हो जाएगी। दिस इज़ द शॉर्टकट, ठीक है। तो आप शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे रखते हो या आप अपनी मर्ज़ी से इसको नीचे जो आपका स्टेटस बार होता है वहाँ पे रख लो, सो दैट जिस तरह यहाँ पे इन्होंने क्विक लॉन्चर में रखा हुआ है, क्विक लॉन्चर इज़ लाइक क्विकली आपका वो फाइल खुल जाती है, क्विकली आपको वो नज़र आ जाती है, ठीक है। इट इज़ दैट। तो आप वहाँ पे रख देते हो, इट मीन्स कि वो आपका एक शॉर्टकट बन गया। शॉर्टकट बनता है कैसे, जस्ट जैसा कि आप न्यू फोल्डर बनाते हो, न्यू फाइल बनाते हो बाय क्लिकिंग राइट क्लिक और ओवर देयर, तो वहीं पे ही ऑप्शन आपके पास, आपको यू कैन सी दैट न्यू के बाद न्यू की ऑप्शन, शेयर विद, कट, कॉपी, पेस्ट, क्रिएट शॉर्टकट की ऑप्शन आ रही है, तो वो आपका शॉर्टकट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ड्रैगिंग अ फाइल, फर्स्ट वन ऑप्शन थी आपके पास, आप सिंपली उस वहाँ पे जाके क्लिक करो और न्यू फोल्डर बना लो। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको ड्रैग करो, ठीक है। ड्रैग एंड देन आप ड्रैग कैसे करते हो, ये फोल्डर आपने उठाया, सपोज मैंने यहाँ से ये फोल्डर उठा लिया और हमने क्लिक नहीं छोड़ना, आपने सिंपली उसको एक्टिव विंडो से इनएक्टिव विंडो पे जाके छोड़ते हैं। एक्टिव इनएक्टिव का आई होप आप लोग को पता होगा। एक्टिव विंडो जिस पे आप काम कर रहे होते हो, इनएक्टिव विंडो जो आपके बैक एंड पे खुली होती है, ठीक है। जहाँ पे जाके आप क्लिक छोड़ोगे अपना, वेयर एवर यू गो एंड रिलीज योर क्लिक, दैट फाइल इज पेस्टेड ओवर देयर, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैं आपको फर्दर अपना जो है पीसी पे बताती हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर और अ फाइल, ठीक है। सपोज अब ये दिस इज माई डेस्कटॉप, ठीक है, एंड हियर आई वांट टू create a shortcut. I just click right click. I'll go there new. अब you can see shortcut. See, it is asking what name you want to give to your shortcut. ये शॉर्टकट बन गया, मैंने कोई नेम नहीं दिया इसलिए वो डिलीट हो गया, ठीक है। मैं आई वांट कि इस जो मेरा पड़ा रखा हुआ है फ्लैश फोल्डर, आई वांट द शॉर्टकट ऑफ दिस फोल्डर। तो shortcut, now as you can see there are two folders, one is shortcut। आप देखो ये जो एरो की बना हुआ है ना, this represents कि ये शॉर्टकट है ना। I want to delete it, delete this folder, ठीक है। राइट क्लिक किया, डिलीट की ऑप्शन आ गई। रीनेम की ऑप्शन मैंने आपको बताया था, सपोज आई वांट टू रीनेम इट शॉर्टकट, शॉर्टकट का आ गया आपका, ठीक है। आई वांट टू कट इट, कट पेस्ट, जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है। अब देखो, नाउ आई विल टेल यू कि ड्रैगिंग कैसे करते हैं। सपोज आई हैव ओपन दिस फोल्डर, ठीक है, दिस इज माई फोल्डर, ठीक है, इट्स माई एक्टिव विंडो एंड दैट इज माई इनएक्टिव। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट, ड्रैग कर रही हूँ मैं, आई हैवंट रिलीज द बटन येट। मैंने यहाँ पे आके पेस्ट किया और ये देखो ये फोल्डर यहाँ पे आ गया। Now I want to delete that folder. अच्छा, I have told you कि न्यू फोल्डर की आपके पास ऑप्शन एक ये वाली होती है, यू कैन क्लिक दिस न्यू फोल्डर। आपका न्यू फोल्डर बन गया, सी, ठीक है। यू कैन डिलीट इट, डिलीट हो गया। अब मैं इसको भी डिलीट करूँ, डिलीट, ठीक है। सिंपल इट इज दिस। तो यहाँ तक इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me. That's it for today's lecture. I hope you got the points. Thank you very much. Allah Hafiz.